Hello guys, welcome back to my channel Formal Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on patient counseling. So today we will talk about the counseling regarding the proper use of medicines, benefits of patient counseling and how you become a proper counselor. For my previous video on patient counseling, you can check the link in the description box or you can click on the I button also. Let's talk about the counseling regarding the proper use of medicines. So before using the medicine, you have to take the past history related to the disease or any drug intake from the patient, and you have to check any allergic conditions related with the particular drug to the patient. Then major diseases like the diabetes, hypertension, liver impairment, renal impairment, you have to check with the patient before giving them the medication. Then pregnant and breastfeeding women, so you have to take that condition also. Then storage of the medicines, so you have to tell the patient that you have to keep your drug away from the reach of the children. You have to store the medicines in a cool and dark place. Then preventing liquid medications from freezing. Then discarding of the expired medication. Then single dose injectable, discarding remaining amount after use. So these are the storage condition which you have to explain to the patient कि आपको चिल्ड्रन से दूर रखना है आपके मेडिकेशन को, आपको पर्टिकुलर मेडिकेशन को कूल एंड डार्क प्लेस पे रखना है, आपको लिक्विड प्रिपरेशन को फ्रीजिंग नहीं करवानी है, आपको फ्रीज़र में नहीं रखना है उनको. फिर जो भी मेडिकेशन है जो एक्सपायर्ड हो चुकी है तो उनको यू हैव टू डिस्कार्ड दैट पर्टिकुलर मेडिकेशन. देन अगर सिंगल डोज इंजेक्टेबल अगर आप यूज़ कर रहे हो तो जो रिमेनिंग है उसको अमाउंट को डिस्कार्ड करना है आफ्टर यूजिंग. Then proper use of the medications, like advice about the dosage form, what dosage form they have to use. Then information regarding the dosage schedule कि what schedule they have to follow. फिर ड्यूरेशन ऑफ द थेरेपी, कितने ड्यूरेशन तक उनकी थेरेपी चलने वाली है, फिर किस तरीके से उनको वो पर्टिकुलर मेडिकेशन को यूज़ करना है. देन व्हाट प्रिकॉशन दे हैव टू टेक while using the medication. Then what are the side effect of that particular medication. Then you have to manage the medicines and the expiry date of the medicines. Then you have to give the important instruction before leaving the pharmacy. Whenever the patient leave the pharmacy, then you have to give the important instruction like what is the aim of that particular treatment, then what is the administration schedule, then what or in what amount, in max amount the dose in 24 hours you have to take, then how long to continue that particular medication, then what to be done if something goes wrong, if a dose is missed, or how to recognize the adverse effect and minimize their incidence. So you have to tell all the important instructions to the patient before they leave the pharmacy. Then change in the lifestyle or the dietary habits to be made during the therapy, then intended use and extended actions of that particular medication, then discarding of the unused medicines beyond expiry date, then excipients having the potential of producing the adverse effect. So that all the things you have to tell to the patient. Then communication skill in effective counseling, so communication skill is very important for the effective counseling to the patient. So you have to be you need a good communication skill while communicating with the people. So for that you have to do the constant effort and innovation. Then you required time for that particular skill. Then positive thinking is should be there. Then financial resources should be there. Then match to the knowledge, social background, interest and purpose and need of the recipient. So all are needed for the good communication need. Then that communication is affected by the attitude, expression and the gesture, that is your body language. तो body language किस तरीके की है तो उससे आपका जो communication skill है वो effective होता है. Then you have to take the feedback, both immediate and subsequent feedback, so that आपको पता चलता है कि आपका जो communication skill है तो वो good है कि नहीं है, effective है कि नहीं है. Then work done to complement the verbal communication. So you have to give the leaflet which provide you the specific information about the particular medication, about the schedule, about the dosage regimen to that particular patient. So you have to provide the leaflet. Then designing of the special treatment pack, then suitable labeled medication dose compartment ads you can give. Then barley marking over the large print, so clearly read by blind and the पार्शली साइटेड पेशेंट जो रहते हैं वो
जो ब्रेली रहती है उससे ईजिली रीड कर सकते हैं. Then before starting what are the pictograms, I have to mention the benefits of the patient counseling. So what are the benefits of patient counseling? That they satisfaction of having fulfilled his or her professional duty. तो वो एक बेनिफिट मिल जाता है. उसके बाद में सर्विंग द पेशेंट एंड देयर वेल बीइंग, इम्प्रूविंग पेशेंट कंप्लायंस. देन फार्मेसी इज सीन एज अ प्रोफेशनल एंड केयरिंग pharmacy. Then formation of the trusting relationship with the patient. So these are the benefit they will get after the patient counseling. Then what steps to becoming a counseling pharmacist. अगर आपको counseling pharmacist बनना है तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि you have to evaluate your own values and priorities first of all. Then you have to evaluate the barrier to the patient counseling. Then you have to arrange for the removal or reduction of the barriers where possible. Then you have to arrange for the counseling aids. Then you have to prepare staff and the physician and the patient. Then you have to prepare for each counseling session. Then you have to give the progress into the counseling in a step. Then remember to tailor counseling. Then arrange for the practice and self-evaluation. So these are the steps you have to follow for the better counseling as a pharmacist. Then what are the pictograms? Pictograms means with the help of picture you have to explain to the patient ताकि वो easily समझ पाए कि क्या information आप उनको देना चाहते हो. जैसे what are the pictograms? You can see that the descriptive symbols that illustrate the information like the ones in a road signal. So जैसे road signal पे आप जैसे marking देखते हो तो वो ही आपका एक तरीके से pictogram में आता है. तो you have to use that specific pictures to illustrate the information to the patient. So used especially for the elderly patients जिसका प्रॉपर साइट नहीं है उसके लिए आप इनको यूज़ कर सकते हो. फिर जिनकी लिटरेसी स्किल जो है बहुत ही लो है या चिल्ड्रन के लिए जो कि इजीली अंडरस्टूड कर सके. तो क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं पिक्टोग्राम के कि यू कैन प्रोवाइड द नॉलेज ऑन मेडिसिन एंड डिसीज़. तो ओरली इन्फॉर्मेशन अगर उनको समझ में नहीं आती है तो रिटर्न इन्फॉर्मेशन जो रहती है वो भी कभी कभी वो लोग समझ नहीं पाते हैं क्योंकि वो लिटरेट नहीं होते हैं. सो विजुअल एड इफेक्टिव फॉर द नॉन लिटरेट पीपल. इसलिए विजुअल जो एड्स अपन प्रोवाइड करते हैं तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से इफेक्टिव वे होता है. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर डायग्राम में कि पिक्टोग्राम यूज फॉर द डायरेक्शन ऑफ शेक वेल बिफोर यूज. सो यू कैन इंडिकेट बाय दिस. देन टेक 4 times a day with meal and at bed time. So you can see that how they are demonstrating it by picture. Then pictogram used for the storage that you don't have to freeze that particular medication. Like जैसे मैंने अभी बताया था कि liquid preparation आपको freeze नहीं करनी रहती है. Then do not store the medicines where children can get. तो आपको चिल्ड्रन के से दूर रखना है पर्टिकुलर मेडिकेशन को तो वो वैसे इंडिकेट कर सकता है. फिर दिस मेडिसिन में मेक यू डिजी. तो कुछ मेडिकेशन ऐसी होती है कि जो आप लेते हो तो उससे आपको डिजी फील होता है तो इस तरीके से आप इंडिकेट कर सकते हो. देन किसी से आपको ड्राउजी फील होता है तो यू इंडिकेट बाय दिस पिक्चर. Then documentation for the patient counseling. So you have to keep the record of all the major and ancillary services provided to the patient by the hospital. तो सारा डॉक्यूमेंटेशन आपको रखना पड़ता है. स्टेप्स मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है और वापस से रिपीट कर देती हूँ कि स्टेप्स फॉर बिकमिंग द काउंसलिंग फार्मासिस्ट. सो यू हैव टू इवेलुएट योर ओन वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज. देन यू हैव टू इवेलुएट द बैरियर्स टू पेशेंट काउंसलिंग. देन यू हैव टू अरेंज फॉर द रिमूवल ऑफ और रिडक्शन ऑफ द बैरियर वेयर पॉसिबल. देन यू हैव टू अरेंज फॉर द काउंसलिंग एड. देन प्रिपेयर स्टाफ फिजिशियन एंड द पेशेंट. देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ईच काउंसलिंग सेशन. Then progress into the counseling in steps. Then remember to tailor the counseling. Then arrange for the practice and self evaluation. Then conclusion पे अगर आते हैं तो pharmacist एक तरीके से यूनिक पोजीशन रखता है to favorably influence on the cognitive and motive elements of the patient compliance. और several different education methods भी apply कर सकते to utilize that. और not every method effective in every setting. So select those techniques which best suit the specific setting. And the patient population must educate and motivate to participate maximally in this drug therapy. So the ultimate goal of every physician whenever he write a prescription that patient to receive the full therapeutic benefit of that treatment that he has designed.
तो जो भी फिजिशियन रहता है उसका क्या मेन गोल रहता है कि जो भी उसने प्रिस्क्रिप्शन लिखा है तो उसके थेरेपेटिक बेनिफिट जो है वो पेशेंट को मिले, और दिस गोल कैन बी अचीव्ड ओनली इफ द फार्मासिस्ट स्ट्रेस द एजुकेशन कंपोनेंट गाइड द पेशेंट टुवर्ड्स अ मोर रिस्पॉन्सिबल ड्रग यूज़। और ये कब अचीव कर पाएगा, जब आपका फार्मासिस्ट जो रहेगा वो पेशेंट को गाइड करेगा, उसको काउंसिल करेगा कि कैसे उसको मेडिकेशन को लेना है, कैसे उस मेडिकेशन से अडर होकर रहना है, तभी वो लोग बेटर जो थेरेपेटिक बेनिफिट्स रहते हैं वो गेट कर सकते हैं। That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.